अच्छा, so इसके अलावा भी मैं आपको साथ शेयर करूंगा. वैसे I've shared a lot of things with you, so please go through all of them. They're all very important. Okay, all of them. So let's start from the basics. So obviously you are aware of the fact that this is the way you can put multiple comments in your scripting. Okay, so / and star, and then you can put your comments in between, and you can close this. Basics to start. मैं वैसे ये कराने लगा था practically, मगर ठीक है हम यूं discuss कर लेते हैं. It's fine. Alert is basically used to output a message. Okay, that's why you use it. कोई मैसेज आपने डिस्प्ले करें तो we can use the alert command. वेरिएबल की डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं. वेरिएबल्स बेसिकली स्टोर any data type, whether it's a date, time, okay, string, whatever. Variables can store that. Okay, so whenever you say variable a is equals to 5, it means the value of 5 has been stored into a. So a variable basically is a temporary storage unit within the processor's register where things are stored, and they are volatile, which means as long as the computer is on, the values of variables will be there. So हम variables को यूं define कर सकते हैं, variable price या variable this. We should not have variable names as numbers. इसका हमें पता है. Okay. Array variables, मैंने आपको जब start किया था JavaScripting, I did tell you कि जो आपकी arrays होती है, that's also variable. We learned how to define an array this way. So when we say variable fruits is equals to this means we have defined an array. So मैंने पहले भी आपको explain किया था कि as far as arrays are concerned, arrays are container, but they're a larger container. If I say a variable is a container, it's a small container, and much larger container is your array. The reason why we use these brackets is because we consider this as a database package. So it's comma separate values can be stored. There are my lectures where we have discussed is string manipulation and array manipulation. So you should know different array manipulation methods. Okay, I can share those lectures with you as well. Okay, उसमें I've discussed कि आप variable names को arrays को किस तरह define कर सकते हो. Getting input from the user, if you want to get input from the user and you want to store in a variable, we can say is variable this, and we can use prompt. So जो भी हम ये लिखेंगे, that will be stored in the prompt. Okay, तो prompt में जो भी value इधर आएगी variable में store हो जाएगी. Okay, that's how we do it in JavaScripting. बाद में उसको आप use भी कर सकते हो. For example, मैं थोड़ा सा करके भी दिखा देता हूँ कि so that concept ज़्यादा अच्छा और clear हो जाएगा. No worry, हम आज क्लास में सारा डिस्कस कर लेंगे. It's not a lot. Practically, frankly speaking, हमने इससे ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है. This isn't much. Okay, so let's say मैं ये कह रहा हूँ let's say in scripting, और आप लोग तो ये सारा actually कर चुके हो practically, so hopefully you should not have a big problem. So let's say scripting, what is wrong? Script and close the script. So what I'm saying is we can say over here is that we can simply have is a variable a is equals to prompt, not in capital, never write in capital. Variable a is equals to prompt, and we can simply say over here is the number, and we can say variable p is equals to prompt, and then we can do is we can say over here is enter the second number, right? And then we can simply say over here is that alert, जो भी मैं explain कर रहा था, which is a plus b. So that's how we can display an output. Or obviously, if we preview this, so we get is, hold on. I didn't close the script, sorry. So if I run this again, it will ask me for a prompt. I enter 3, then I enter let's say 6. So I get the prompt over here. You could even do this, or you can even use जो आपको पता है चाहिए document.write
which means you can even write it down over here. You can write as A plus B. So you can manipulate these any way you want to. So you can have over 6 and 6. So 66 लिखा रहा है क्योंकि obviously हमने discuss किया हुआ पहले ये, because I need to actually multiply this by 1. क्योंकि when I use plus, तो क्या होता है? It's concatenating it. But when I multiply it by 1, it's considered as a number. So if I write over here 6 now, and if I enter 6 over here, it says 12, not 66. We have discussed this before. Okay? Let me get back to what we were discussing. So displaying output, मैंने get element by ID की बात की हुई है बार-बार. Okay? So get element by ID क्या होता है? Every tag that you have in HTML can be given an ID. H1, H2, paragraph, image, tables, all of them can be given an ID. So H2 to basically use hota hai to just type some text in heading 2 font. But if you give it ID, iska fayda ye hoga कि I can refer to it anytime I may want to. Okay? इसको कहते हैं get element by ID. Okay? मैं इसका एग्जांपल आपको फिर दे दूं, ज्यादा आसान होगा हमारे समझने के लिए. इसके एग्जांपल के लिए what I'll do is, obviously directly you नहीं करते. I'll simply come here and I'll just make is input type a button value show लिखा है इसके ऊपर, और on click पे I'll just make is a function. साथ function की discussion भी हो जाएगी. Okay, call me. Right? So what I'll do is I'll make a function and function call me. सुनिए बेटा, यूं आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा. Okay, मैं इसलिए कह रहा था मुझे यूं कराने दो. Okay, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. कोडिंग भी साथ साथ हो रही है. So मैं फंक्शन में क्या करना चाह रहा हूं कि I am going to explain, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस हो जाएगी. मैं यार यूज करता हूँ H1 का. I'll use H1. I will give it an ID, let's say is me. I don't know, I always use me. And I close the H1 font. और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि this is text. So I have some text over here and I have the show. तो जब बटन है show, वो function call me, और call me क्या करे? It should say is go to my document, get an element by ID me within the page, dot inner HTML, find it within HTML, is equals to assign kar de changed text. So what's happening over here is if I click on this now, it changes the text. Why? किस तरह काम करे इसकी बात करते हैं. पहली बात तो ये है कि जो buttons के ऊपर when we click, it's known as an event. Event क्या होता है? Event होता है कि when we open a page, close a page, hover over an image, click on a button, ये सारे events हैं. User always perform events. So मैंने एक button पे on पे किया, मतलब मैं button पे I want to do something. So उसके लिए I have to make a function. A function will perform the following thing. ये following thing क्या हो रही है? ये कह रहा है मेरे document पे जाओ. ये पूरा एक document. You see, doc type, it's a full document. Get element. मैंने आपको बताया हुआ है कि element का मतलब होता है tag. It's another name. So H1 is an element. Body is an element. Table is an element. ये सारे elements हैं. वो कहता है get element me. कहाँ से? Dot inner. You'll find it within HTML. You'll find it. ये HTML है ना? ये HTML है. वो कह रहा है HTML के अंदर की नजर आएगा. हाँ, ये देखो. I have H1 and H1 has been named as me. So equal to, which is assignment, assign. So assign the following text to this. Assign the following text to this, single equal to, assignment. ये इधर assign हो गया. जब मैंने बटन पे क्लिक किया, फंक्शन पे गया, और फंक्शन ने सारा परफॉर्म किया, and this is why when I click on this, इसकी बजाय I get this. So functions and this. Is the point clear? All of you? Sumia, Goa? Yes, sir. Right, good. Yes, sir. So, इसलिए मैं पहले you explain करना चाह रहा था कि सारा क्या होता है. Functions मैंने just told you, we talk how to call a function on click, मैंने बता दिया.
लोकल ग्लोबल वेरिएबल्स का ये होता है कि ग्लोबल वेरिएबल होता है कि लेट्स से ओवर हियर इफ आई मेक मल्टीपल फंक्शंस, ओके, 1 2, मैं वेरिएबल यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ. आई कैन से इज वेरिएबल a is equals to 5. So ये is a global variable, which means function से बाहर. If I define variable a over here inside that, that's a local variable. Why do we have to define global variables? Maybe I will be using them again and again. Okay, so I don't want to define again and again. But why will I be using local variable? Maybe I don't want that particular variables to be declared globally. I don't want the access of those variables to be given to other functions. So I will declare them locally. So locally or globally depends on the circumstance, the problem that you're dealing with. उस पर depend करता है. Okay. Operators, we know this is used basically as concatenate. अभी मैं discuss किया, अगर आप इसको string के साथ use करोगे तो concatenate करेगा, अगर number होगा तो उसको plus करेगा. Subtraction, multiplication, division, I no need to explain this. Plus plus हम discuss कर चुके हैं. For loop plus plus होता है, again just a quick discussion, won't take time. For example, for loop. So for loop के अंदर if I say variable a is equals to 0, initialize always a loop, a is less than or equal to 12, always condition, and a is equals to a plus 1, which could also be written as a plus plus. It's the same thing. So over here what we can do is we can simply say is document dot write. I'll write a comma, and if I need to insert is HTML coding within Java, I will always put them double quotes. Okay, इसको मैं run करूंगा, so I get is this 1 0 till 12. हम for loop डिस्कस कर चुके हैं पहले, और मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि for loop में क्या होता है कि we have initialization, condition, increment, और two things to be noted. So सबसे पहले a 0 हुआ और a हो गया, a is equal to a plus 1. For the next occurrence a will become 1. मगर right now document write 0 print हो गया. It goes back. So when it goes back, a will not reinitialize again. The only reason why a will reinitialize again is जब क्या होता है, जब for loop से you come out and you go back again. Only then this will reinitialize again. अभी नहीं हुआ. So 0, next में a becomes 1. So 1 is less than or equal to 12. For the third occurrence, a will become 2, but right now 1 will be printed. Goes back 2. 2 is less than 12. Statement is true. For the fourth occurrence, a will become 4. Magar 3 will be printed. So 4 will be printed. 5 will be printed. A time will come when 12 comes in. When 12 comes in, 12 will be printed because 12 is equal to 12. But for the next occurrence, a becomes 13 and it comes back and it checks the 13 is less than or equal to 12. It says no, the condition isn't true. जब condition true नहीं होती तो उसे बाहर निकल आता है and it doesn't work. Okay, इसका proof ये है कि जब इसे बाहर निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ simple आप लिख सकते हो I'm out. So basically it's out. If I run this now, it says I'm out. मतलब 12 के बाद वो इस ब्रैकेट से बाहर निकल आता है. It's out of here. Yes or no? Clear? That's how the for loop works. इसी तरह, since मैं ये discuss कर ही रहा हूँ, let me discuss post condition and pre condition loop. What's a post condition loop? Post condition loop होता है when I use variable a is equals to 0, and when I say while a is less than or equal to 12, और फिर मैं कहता हूं इधर a document dot write a, or wait, let me just make sure it goes into the next line. So I put the br tag, here we go, और इधर आके मैं करूंगा a plus plus. Right. I hope there is error card. Why? Oh, I didn't put the bracket. Okay, so let me just copy it in case there's an error. So yeah, so it works. Basically what's happening is again ये आपका while loop.
This is your post condition loop. Okay, so post का मतलब होता है condition पहले आती है, pre का मतलब condition बाद में आती है. So you see, I have a variable declaration, I have a condition, and I have an increment. A is equals to a plus 1 या a plus plus a की चीज है, confuse नहीं होना. A is equals to a plus 1. Output will be the same, वो shorter form है a plus plus. So वही चीज बार बार हो रही है कि वो print किए जा रहे हैं. So a is equal to 0, 0 is less than 12, so it prints it, increments, goes back. एक ऐसा time आएगा when this condition not true, it will come out. Okay, if I write over here is 13, yeah, let's say 123, so obviously nothing will appear out. Okay, या यूं कह रहे हैं Sir, what's the difference between this and the for loop? Okay, basically there is not much of a difference. You can use a for loop or you can even use this. Loop आपकी मर्जी होती है कौन सी यूज करने हैं. हाँ, इसमें और do while में फर्क होता है, जो मैं भी एक्सप्लेन करने लगा. While and do while में फर्क है. One is post condition, one is pre condition. Okay, so what's happening over here? I was just trying to explain. When variable is 123, so 123 is not less than equal to 12, so it's I'm out. Remember this, what I've done, which means the condition is checked first. What if I take this condition and what if I place this condition here? And if I write over here do, what happens now? Oh, it prints 1, 2, 3 and then says I'm out. I'll tell you why. Because यहाँ क्या हो रहा है? This is a precondition loop. It says do the following thing. Do print it. So my variable is 123. It says do print it, later increment it, and later check. But later check का मतलब है कि तब तक ये print हो चुका होता है. जब इसको check करता है कहता है no, 123 is not less than equal to 13. So it says I'm out. So why do we have to use do? Well, maybe you want to check the condition first at times, always. Okay, if in case of error handling and all that. कभी आपको जरूरत पड़ेगी, उसके लिए यूज करते हैं. So this is do while and for loop. Are they clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Now let me go back to the document. मैं इसे साथ करके भी दिखाना चाह रहा हूं आपको. ये वही है, assign sum. So if you say variable x plus, so basically this is the way we can add plus, we can subtract, we can multiply. Okay, so अगर a plus plus भी होता है तो we can even assign them this way. Okay, और इसकी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं. कंपैरिजन हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने A1 में किया था. Double equal to is comparison, single equal to is assignment, and triple equal to is strict comparison. I told you, which का मतलब है कि वो compare करेगा उसकी value को. For example, if I say true is equals to 1, so 1 technically is true, मगर आपको false देगा. Okay, because it looks at even the data type. So equal type, मतलब data type. You get my point? This is not equal to. Okay, or this is not equal to, मतलब ये assignment नहीं है, not equal to, और उसकी वो check करेगा कि is the left hand side not equal to the right hand side. For example, अगर मैं लिखता हूँ variable a is equals to password और मैं लिखता हूँ variable b is equals to passwords. So if I say variable a is not equal to this, तो वो obviously statement उसके मुताबिक काम करेगी. So whenever you have to compare whatever is on the left hand side with whatever is on the right hand side, we can use double equal to and or not equal to. Greater than ये तो आपको access में पता है. This is and, this is or. Two pillars are or, ये आपको पता है. ठीक है, right? Conditional operator. Well, conditional operator का use इतना ज़्यादा नहीं है. इसकी जगह आप simple if भी use कर सकते हो. So मतलब इसका ये होता है कि that the way we use it is variable name is equals to condition, and if you put a question mark, then this, which means result guess
is guess equal to the target? What are you typing? Okay. If the statement is true, do this. So it's just like using the if, frankly speaking. If this statement is true, so then do this, right? Okay. Or colon, आप लिख दो, sorry, your guess was wrong. So it's an alternate to the if statement. Condition, हाँ, if पता है आपको इसका? मैंने done many times. So if for if the else statement, if condition, else if. So if then else statements हो गई. मुझे बता दोगे मुश्किल है तो मैं आपके दिन डिस्कस कर सकता हूँ. Sir, can for, while, and if come in our theory papers? Sorry, बेटा. Can if, for, and while loops come in theory papers? बिल्कुल they can, but absolutely they can. You should do it. In fact, the comparison of a precondition loop and a post-condition loop, the question तो बड़ा typical है. You should know that. Okay. Switch statement basically होती क्या है कि if I have saved it because I don't want to type it, लंबा हो जाएगा. Hold on. Switch statement. I did type it. Just 1 second. Yeah. So switch again is an alternate to our if. So basically काम यूं करता है switch को आप यूं देख लो कि if I type variable subject is equal to this, so switch subject like. तो मतलब अगर if the subject like जो भी होगा, if I write over here maths, English, maths, sorry, IT, so that's how it works. Switch, it looks at the variable जो enter किया. Then we use case, and case. So if case is IT, then write this. Break means if it's IT, write this and then you end it. If it's maths, then you write this, then you end. If it's physics, then you write this, then you end. Again, if then it'll say if this statement is to do this, else if do this. But this is the way switch works. It switches. ये इसका syntax है. You should know the syntax of it. तो break क्यों use कर रहे हैं? मैंने दोबारा बताया था, break is used to obviously, if the statement is to write this and we break it. Otherwise, if I don't break it, it will display this, then it will display this. Do not break, it will keep on going on. I don't want that. जोन सा भी केस हो, उसमें से देखे कौन सा केस है, and then break it. That's how basically it works. मैंने ये फाइल आपसे शेयर की हुई है, ठीक है? Loops, अभी मैं डिस्कस किया for loop, while loop, do while loop. I just discussed it. Okay. Getting user input in boxes. We have discussed validation के काफी lectures हैं. So how to validate a text box, how to validate a drop-down menu, how to validate a radio button. Okay, you should know that. Okay, मैं भी lecture share कर दूंगा आप लोगों के साथ सारे. So developing scripts, ये usually practical के लिए है. ये जो मैंने आपसे एग्जांपल शेयर किए हैं उसमें इसका सॉल्यूशन भी है. The same I shared with you. ये JavaScript examples I've shared this with you. इसके अंदर you will find the solution of this as well. Same, उसका नाम ही quiz program है. Alerts आ गए, फिर वही variables. These are आप उसी की बार-बार examples हैं, different examples उन्होंने दी हुई हैं. और आपने याद है when we did 25 की activities, उसमें ये सारी हमने की हुई हैं. ये आपको सारी याद होंगी. We have done all these. Okay, A1 में हमने किया था all this. ये सारे वही examples हैं. There are different multiple examples. 25. I would say that I advise you कि अगर आप practical तो नहीं दे रहे, फिर भी वो example देख लेना if you want, because JavaScript का question अगर 8 से 10 मार्क आता है, so you should be able to do it really well.
ये सारे हमने की हुई हैं, आपको याद होगा ऑपरेटर्स. दीज आर ऑल, क्योंकि मैंने वो एग्जामिनर्स की एग्जाम्पल ही वो चेंजेस किया होता, बनाया हुआ था, तो सारी वही है. बल्कि इनफैक्ट ये इसके अंदर आपको उनका सारे इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा. फॉर लूप एग्जांपल है, यू हैव टू हैव, एंड देन समिया यू हैव कैन लेट मी नो कौन सी एग्जांपल में आपको समझ नहीं आई है, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ देम. वही 25 हो गई ना, तो 25 एक्टिविटीज उनकी एग्जांपल्स हैं, ये पूरी है. यू गेट द पॉइंट. Yes, sir. आपने इसके थ्रू जाना है, आप इसको दोबारा डिस्कस करो, गो थ्रू इट. मैंने शेयर किए हैं आपके साथ, उनको पढ़ो. कल मुझसे पूछ लो कि सर ये वाली एग्जांपल की मुझे समझ नहीं आई है, कैन यू एक्सप्लेन मी, एंड आई विल एक्सप्लेन यू. Dua, everyone, any problem? No, sir. Should we practice practical of JavaScript to help with theory? Absolutely बेटा. देखो जो जो P3 में आता है ना, P3 में आपको दे गिव यू द स्क्रिप्ट, आप उठा के देख लो पेपर्स. ओके, आपको स्क्रिप्ट दे देते हैं और आपको कहते हैं स्क्रिप्ट को या तो रेक्टिफाई करो. सो अनलेस एंड until you don't know the scripting, how would you rectify it? And it's not a big deal. ओके, तो सिंस आप प्रैक्टिकल नहीं दे रहे हो तो इतना काम तो हो जाएगा नहीं. सेम केस एनिमेशन के तो आपको आइडिया है, तो आपने जो 2 साल पढ़ा है प्रैक्टिकल के साथ, वो जाया नहीं जाना चाहिए. यू नो एनिमेशन कॉन्सेप्ट, यू नो ग्राफिक कॉन्सेप्ट्स, यू नो मेल मर्ज कॉन्सेप्ट्स. अब ये सारे प्रैक्टिकल P3 में आते हैं, तो अब वो ये तो नहीं करेंगे ना आपके लिए वो एक सेपरेट P3 बनाए, दे वोंट डू दैट. ठीक है, हम अगर उस तरह प्रैक्टिकल आपको ही देना पड़ेगा, थ्योरेटिकल सॉर्ट ऑफ करना पड़ेगा. क्लियर? Yes, sir. ओके, हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग? मरियम, दुआ कैसे जा रही है आप लोगों की? Sir, I started P3 and I did the first 2 chapters of P3 and I started Access in Excel. Are you solving P3s and comparing with marking scheme? Try to check. Sir, right now I'm just doing the reading and the questions first, then I'll Okay. do the past papers. And then you please mark yourself. Okay, sir. When Sir, you can I mark send yourself, yeah. Sir, You, can I when send you, the solved past papers to you? exactly. आप तीनों ही काम करो, मरियम आप भी mark yourself. और जब अपने आपको मार्क करोगे ना, आपको आइडिया होगा हो सी, और मार्किंग के फायदा होगा, यू नो हाउ टू आंसर एज वेल. आप पेपर सॉल्व करो, खुद चेक करो, खुद मार्क करो. आई एम टेलिंग यू, यू लर्न अ लॉट. और ER एग्जामिनर रिपोर्ट्स पढ़ो, मैं बार बार कहूंगा आपको. यू हैव परफेक्शन. कल ऐसा करते हैं, कल मैं P3 ही सॉल्व करूंगा एक, और पूरा एक्सटेंसिव डिस्कस करूंगा कोई एक P3 कल, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट P3 है. और कल यूं करेंगे कि मैं आपसे पहले पूछूंगा, आपसे पूछूंगा कि व्हाट डू यू थिंक द आंसर इज, देन विल डिस्कस. सिर्फ मैं सॉल्व नहीं करूंगा, हम स्टेप बाय स्टेप यूं करेंगे. ठीक है सुमैया? Yes, sir. एनी फर्दर क्वेश्चन सुमैया? Yes. ओके, आप इसके गो थ्रू करो, और कल मैं पहले आपको टाइम दूंगा इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट. ओके, एंड देन यू कैन अपडेट मी. ठीक है? Yes, Yes. sir. ठीक है, चलो फिर कल सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह. ठीक है, 8 o'clock. आप लोगों ने स्कूल नहीं करना है. Sorry? यू विल बी इन स्कूल राइट, या यू क्या? School, I think. ओके, ठीक है, आप मुझे बता देना. ठीक है, Yes, sir. ओके.